Okay, चलो. Now we'll go for a algebra topics का. Algebra में what are the topics we are dealing? We are dealing different topics का, like coordinate geometry होने दो, कुछ भी होने दो, सब कुछ quadratic equations, everything basics of 10th class का. Okay, चलो. First one is quadratic equations. You already remembered quadratic equations, right? So what is the general equation? Ax square plus bx plus c is the general equation of the quadratic equation. And how to solve? Minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. This is a 10th class we done, right? And what is sum of zeros from this? Sum of zeros, minus alpha b beta. by minus b by a, Product of zeros? c by a. Write down. Alpha plus beta is minus b by a. Alpha beta is c by a. बेसिक्स में आपको मेजरली आपको लॉगरिथम सम ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है. ये वाला बेसिक्स है, अंडरस्टैंड करो, फास्ट फास्ट करेंगे. Yes, sir. ओके, चलो न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बेस में. फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल 0. मालूम है ना? यू कैन गो फॉर स्प्लिटिंग मिनटम और क्वाड्रेटिक फार्मूला. Sir, 3 by 2 and minus 1. यस. फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. स्प्लिटिंग मिनटम नहीं है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जाके खत्म कर लो. Sir, 4 comma minus 20 by 3. Which one? First one, huh? Yeah, first. No wrong. Minus b plus or minus under root b square means 4 by 9 minus 4 into 1 into c is minus 5 by 3 by 2a. So minus 2 by 3 plus or minus 4 by 9 minus or minus plus 20 by 3 by 2. So कितना होगा इधर? 64 by 9. 64 by 9 will be 8 by 3 8 by 3. minus 2 by 3 plus or minus 8 by 3 by 2. So कितना होगा? माइनस फर्स्ट प्लस से करो तो कितना होगा? 8 minus 2 is 6. 6 by 6. It is 1. Okay. Second one माइनस लगाए तो minus 10 by 3 into 2 6. So Okay. 2 5. So Yeah. 1 comma minus 5 by 2 is answer. Next one करो.
Sir, what is 228 root? 228 Yeah. परफेक्ट नंबर नहीं है तो सिंप्लीफाई कर दैट्स इट ब्रिंग आउटसाइड इज नॉट नेसेसरी दैट परफेक्ट रूट विल गेट So I'm getting minus 6 plus root 228 by 8 and minus 6 ऑन minus root 228. 228 का रूट 20 का फैक्टराइज नहीं कर सकते Okay. कैन बी आउटसाइड so it is 2 root 57 right now take Yeah. common Minus 3 plus root 57 by 4 and minus 3 Hmm. minus root 57. Yes. Next. Find the sum and product of the roots of the equation. Sum and product. मतलब alpha plus beta, that's it. Yeah. Sum is, first one sum is b by a. So 2 by 3. Okay. Product Second is 3. 3 by product is 5 x by 3. 1 by 3. करो अच्छे से करो. And alpha beta will be c by a. C by a will be 3 by 5 by 3. So it is 9 by 5. इसका Sum is 3 by 4. Product is 2. yes correct. Now next one. Next algebraic function is AP. AP you know right already. Yeah. Formulas याद है? Yeah. General form is a plus d, a plus 2d, so on. And what is the nth term formula is? A of n equal to a plus n minus 1 into d. And sum of n terms का? S of n equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Yes. And other formula? Nothing but Last a n term. by 2 into a plus l. These formulas you studied in 10th. Yeah. इसके बेस में you have to, but you can able to identify right. These are in AP series बोल के. Common difference should be same. Okay. करो. Find the sum of first n natural numbers. In terms of variables में will get. N into n plus 1 by 2. Yes, correct. Find the sum of these numbers. Here n we don't know right. उसका वजह से we can calculate by using how to calculate n. First we find a of n. Yes, correct. Correct.
676. कितना? 676. हाँ, yes, correct. Next, find the 20th term of the series. $77. Next, correct. Now, next one is geometric progression. In maths, we will deal this one geometric progression. Tell me what is geometrical progression means? Like The AP, this is progression with GP. same ratio. हाँ, ये सेम रेशियो में रहने का. उधर कॉमन डिफरेंस सेम है, एक सेम रेशियो रहेगा. सो इसका जनरल फॉर्म इज ए आर स्क्वायर AR power n-1. A is first term, R is a common ratio. Like if you divide AR by A, how much you'll get? R will get. Uh, AR square by AR. Cancel किया तो R will get. So whenever they are in common ratio, that is called GP series. We can able to identify by that. Okay. So for that के लिए we have formulas. Sum of n terms का formula is A into 1 minus R power n by 1 minus R is the formula. And sum of infinite terms, if they ask infinite terms, A by 1 minus R. लिखो. done. Sir. Okay, formula बोल सकते हो? Tell me sum Yeah. of n terms का. Sum of A n into terms equal to A into 1 minus R of n divided by 1 minus R. Sum of infinite terms equal to A by 1 minus R. R is a common ratio, A is a first term. Yeah. चलो. Find the sum of infinite terms. Four by 5. 4 by 5? No, wrong. What is sum of in terms formula? These are in GP or IP? Sum of infinite terms, right? But up to infinite, right? Yeah. A by Uh, 1 minus 1. A by 1 minus R. A is how much? 1 Ratio R is? minus 1 by 4. Uh, this by this, right? How much? 1 1 by by 2 2 by minus 1. 1. R is a ratio, right? Yeah. 1 by 2 by 1 is how much? Minus 1 by 2. Why 1 minus 1 by 2? 1 by 2. Okay. 1 by 1 by 2. So उधर गए तो 2. 2 is answer. If you divide echo 1 by 4 by 1 by 2 is this only same 1 by 2 only. 1 by 8 by 1 by 4 is nothing but 1 by 2 only. So common ratio GP series, and that to infinite means A by 1 minus R is the formula. Find the sum of the series infinite terms. And 1 by 6 by 1 by 3, 1 by 6, 1 by 12 by 1 by 6, they are same. Common ratio. उसको. 2 by 5. How much? 2 by 5. 2 by 5. No wrong. A by 1 minus R, right? खत्म करो.
So R we have is, to do 1 by 6 minus 1 by 3, no? this is in AP or GP? GP. GP means common ratio is how much? 1 by 6 by 1 by 3. So it is 1 by 2 is a common ratio. Okay. Ratio means ratio you have to do. Difference means difference you have to do. Yeah. Yeah. No, sum of infinite terms is A by 1 minus R. Use the formula and solve. 1 2 by 3. Okay. Next, binomial. Third algebra function is binomial approximation. Binomial expression is easy. Here separate chapter रहेगा maths में. But here we are dealing the things. Okay, small things. 1 plus x whole power n will be 1 plus nx when x is much less than 1. Whenever x value बहुत छोटा है तो 1 plus x whole power n will be 1 plus nx. Similarly, 1 minus x whole power n is 1 minus nx. Approximation formula. Okay. ये वाला आपको लर्न करना पड़ेगा. डेरिवेशंस में वगैरह में बहुत यूजफुल होगा अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए. एंड नेक्स्ट वन विल बी द कंपोनेंट डिविडेंड. ये याद है? व्हाट इज द, कैन टेल मी कंपोनेंट डिविडेंड? Like सपोज a by b is equal to c by d. A by what? b is equal to c by d. Suppose what Yeah. will be the, A by B minus C by D after. huh? A by B minus C by D. No, देखो, Okay. सपोज मान लो a by b is equal to c by d, देन आपको सम डिफरेंस इक्वल टू सम डिफरेंस, बोथ आर सेम. Yeah. क्वेश्चन को वी आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग. सम बाय डिफरेंस, सम बाय डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट और डिविडेंड. न्यूमेरिकल्स में एक एक बार को यूजफुल होगा बीच में. चलो ना करो. Find the value, approximate value I want. By using binomial expansion, find the approximate value of root 0.99. So how to find like this? Under root 1 minus 0.01. 0.01 I can write. Under root 1 minus 1 by 100. Yeah. 1 minus 1 by 100 whole power 1 by 2. This is much less than 1, right? Yeah. So approximation वर्ग कितना होगा? 1 minus nx. Nx 1 by 2 into 100 is 1 by 200. So it is 199 by 200. So approximate value will be how much? 9975. It came in exam. It came in exam. There's root 0.995. 995. चलो ना करो. 1030. So 1030 को I can write as 1000 plus 30. Yeah. Okay. Approximate value चाहिए ना. So 1000 I am taking common inside. So 1 plus 30 by 1000. Right? Whole power 1 by 3. So 1000 whole power 1 by 3 will be how much? बाहर लेके आए तो 0.0. no 10 cube, right? Into 1 by 3 will be 3 cancel.
10 आएगा. Yeah, 10. 10 into 1 plus 30/1000 whole power 1/3. So cancel. नो कितना होगा? नो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करो. Yeah, 1. So 10 into 1 plus nx. Nx means 1 by 3, 3 to cancel. 1 by 100. 10 into 1.01. So कितना होगा? 10.1. 10.01. Yeah. तो फाइंड करो इसका. So can you do this? देखो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए ना. सो नीचे 98 है ना. आई कैन राइट लाइक दिस. 98 प्लस हाउ मच इज 1 3. 3 by 98. So divide this. Denominator belongs to both, right? 1 plus 3 by 98. Okay. Approximate value चाहिए ना. 1 plus 3 by 98 whole power 1 by 2. देखो x is less than 1, much less than 1. So Yeah. therefore 1 plus nx. So 3 by 2 into 98. Right? Okay. If you solve, you'll get approximately as 1.015. Approximate value आपको एग्जाम में समटाइम्स यूजफुल होगा ये बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करके. Okay. Copied? Yes, sir. Next. Next is coordinate. This is easy. We should know. We know the distance formula. Formula याद है ना? Under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Whenever two points are given, the distance for formula is under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay. Copied? Yeah. Yeah. Find the distance of a point minus 12,5 from the origin. Thirteen. Find the distance between 2 points. First one is root 10. Root? 10. Oh. Second,
Root 337. Root how much? 337. No, wrong. माइनस प्लस में अच्छा से देखो, x1 y1 x2 y2. Sir, 14 square plus 9 square root, right? 14 square is how much? 256. Plus 9 square is 81. No, 14 square is 196. Sorry. Oh, 196. Root 277. Yes, correct. Find the value of a if the distance between them is 5 centimeters. A equal to 2 and minus 6. A equal to 2 and minus 2 and 6. minus. Yes, correct. There's no graphs of a function. Graphs you have to know. देखो ग्राफ ऑफ फंक्शन में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ग्राफ मालूम है ना? व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ ग्राफ? y Y equal to equal to mx. mx plus c is the formula. If it is passing through origin, Y equal to x square. mx, there is no c will be. Okay, so this is the equation of a line. The equation of a line which is passing, is not passing through origin. Okay, that time उसका equation क्या है? Y equal to mx plus c, where c is the y intercept. C is the y intercept. Very important. C is y intercept. समटाइम्स आपको इक्वेशन इन न्यूमेरिकल्स में समटाइम्स आपको इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई दैट टाइम विल बी हेल्पफुल. y equal to mx plus c. C is called y intercept. Okay, now here already you know m and c, you know, right? M is slope, right? Next, slope का फॉर्मूला क्या है? Which is studied in differentiation also, right? x2 minus x1 divided by y2. अरे उल्टा, y2 minus y1 by x2 minus x1, or delta y by delta x. delta x. This is the slope of a tangent. So whenever वो line straight line देके you have to decide y equal to mx plus c and you have to form the equation. Next. And slope is tan theta, right? A paragram ABCD is given to you. Equation of a side AB. I want equation of this line. So how to form?
देखो AB का सपोज इफ आई सी फर्स्ट फाइंड स्लोप y2 minus y1 by x2 minus x1 y2 minus y1 by x2 minus x1 minus of minus 2, so it is 1 by 2. This is Okay. slope. Yeah. And y-intercept is how much? 90. Y-intercept coordinate, this is the c, how Yeah. much? 1. 1. now equation क्या होगा? y equal to mx plus c. अगर बॉटम है तो -1 we should tell. Okay, Yeah. so y equal to m is 1 by 2x plus 1. This is the equation. Now if you take LCM, 2y minus x equal to 1. 1. 2 right, 2 because आपको मल्टीप्लाई करेगा ना. Yeah. 2y minus x equal to 2 Q. q. ओके, ऐसा करो, फॉर्म द इक्वेशन. Sir, B is T. ये पूरा बोले एक बार. Okay. Sir, done. Tell how much? B1 is P, Hmm. C is S, Hmm. D is R. Yes. नेक्स्ट, क्वाड्रिक इक्वेशन. क्वाड्रिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा रहेगा? Parabol. गुड, पैराबोलिक. सो इट इज द पैराबोलिक ग्राफ, यू शेप राइट. पैराबोलिक रहने पर यू शेप. अगर a इज ग्रेटर देन 0 इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a इज ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड पैराबोला आएगा, a इज लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला आएगा. ओके, एंड वर्टेक्स रहेगा ना इसका बॉटम का पॉइंट. वर्टेक्स का फॉर्मूला है -b/2a एंड -d/4a. ओके, a इज दिस वन राइट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये वाला इंपॉर्टेंट है. -b/2a माइनस कैपिटल D/4a. कैपिटल D इज नथिंग बट
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है, ये वर्टेक्स फाइंड करने के लिए। Done? Yeah. Next. एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ ई पावर एक्स वाला ग्राफ है। आपको देखो y इक्वल टू a इंटू ई पावर एक्स मीन्स ई पावर एक्स का ग्राफ विल बी लाइक दिस, a विल बी कांस्टेंट, a इधर इधर से कट होगा, a इंटू ई पावर एक्स। अगर ई पावर माइनस से एक्स है तो आपको एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, एंड a इज कांस्टेंट, a का कट होगा। ये दोनों ग्राफ ड्रा करो, एंड ई वैल्यू कितना है 2.718218, सो 2.7 बोल के याद रखो, ई वैल्यू ई पावर एक्स का ग्राफ है। ये वाला आपको मतलब चैप्टर में बीच में आएगा, लेकिन चार्जिंग ऑफ ए डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर बोल के आपको 12th क्लास में आएगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज करने समय एक ही मिनट में नहीं डिस्चार्ज करेगा, धीरे 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 लाइक एक्सपोनेंशियल ग्राफ डिक्रीज होगा, उसका ग्राफ दैट टाइम वी विल ड्रॉ दिस ओनली। सो दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू नो, a into e power minus x. Then next, सर्किल एंड एलिप्स का इक्वेशन मालूम है ना? सर्किल का इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड एलिप्स का इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1. So that a is radius, right? A is radius here. We will draw the graph, all graphs का भी एक जगह में ड्रॉ करने वाला है. Okay, done. Okay, चलो नो देखो सम स्टैंडर्ड ग्राफ्स, दिस वन y इक्वल mx माइनस c बोल तो कैसा रहेगा ग्राफ? देखो y इंटरसेप्ट इज नेगेटिव राइट, सो कट इधर होगा एंड स्ट्रेट लाइन पास होगा. दिस इज y इक्वल टू mx माइनस c का ग्राफ. ओके नेक्स्ट, अगर y इक्वल mx बोले तो जस्ट पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड स्लोप पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई इट इज लेस देन 90, थीटा इज लेस देन 90. देखो इधर भी थीटा इज लेस देन 90, m इज पॉजिटिव. नीटली ड्रॉ करो ऑल ग्राफ्स वी आर ड्राइंग नाउ. डन ना? No, sir. नेक्स्ट, y इक्वल mx प्लस c, यू नो. देखो y इसमें क्या फर्क है? ए भी y इक्वल mx प्लस c ओनली, ए भी y इक्वल mx प्लस c ओनली, बट हियर स्लोप इज नेगेटिव स्लोप एंड हियर स्लोप इज पॉजिटिव स्लोप. ओके पैराबोलिक ग्राफ में आपको इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस, मतलब इट कैन बी लाइक दिस और इट कैन बी लाइक दिस आल्सो. हाउ यू रिमेंबर्ड व्हिच वन इज लाइक दिस बोल के, मतलब इस तरफ घूमेगा इस तरफ घूमेगा बोल के. If c is minus, then it will be inverted. C is In minus. नहीं पैराबोला आई एम टॉकिंग, पैराबोला राइट. पैराबोला की इक्वेशन में कैसे रिमेंबर करेंगे, विल सी. ठीक है ड्रॉ कर लो पहले. So that should be y equal to minus mx plus c, no? नहीं स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप कैन बी -2 -3, नंबर m इज नंबर. Okay, done, sir. नेक्स्ट, नो देखो इसमें दिस आल्सो इंपॉर्टेंट है, पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको मैथ्स में पड़ेगा. पॉइंट स्लोप मतलब वन पॉइंट इज गिवन, वन स्लोप इज गिवन, सो हाउ टू फाइंड द इक्वेशन?
Tell me, what is the formula? Y equal to Oh, mx. no, that is what y equal to mx plus c. One slope will be given and y Okay. intercept will be given. We will write the equation. Here, one point will be given like x1, comma y1 will be given to you, and slope also will be given to you. That's why point slope form. Then we have to write the equation. So this equation will be helpful because y minus y1 equal to m into x minus x1. y minus y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन. ये पूरा मैथ्स में आपको डिटेल में पड़ेगा. सेपरेट चैप्टर विल बी देयर, स्ट्रेट लाइंस बोल के. y minus y1 equal to m into x minus x1, where x1 y1 is a point, m is a slope, and x and y values can be anything, general expression. So we will get the equation in terms of x and y. Okay, next. Now देखो, now graph देखो. This is a parabolic. Parabolic में definitely x is proportional to y square or y is proportional to x square, right? Definitely. Now देखो आपको कैसे रिमेम्बर करने का, why it is turning like this, which one is, first of all tell me, आपको कैसे रिमेम्बर करने का, x है ना, x इक्वल टू राइट और y इक्वल टू, दोनों रहेगा, x इक्वल टू y इक्वल टू. x इक्वल टू मीन्स x एक्सिस का देखो x एक्सिस का सिमेट्री रहेगा. ओके, याद रखो, x इक्वल मीन्स x एक्सिस का सिमेट्री, एंड सिंस इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, दैट टू पॉजिटिव है, पॉजिटिव तरफ का, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन राइट, पॉजिटिव तरफ का घूमेगा द ग्राफ. और देखो x is there, x equal to means x axis का तरफ ही रहेगा, बट here माइनस के वाई स्क्वायर, सो नेगेटिव वाई, नेगेटिव में घूमेगा. ऑलवेज पैराबोला शुड बी यू शेप ओनली. Yeah. Done, sir. अब देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंस y इज हियर, y एक्सिस का इस तरफ रहेगा, y एक्सिस का पॉजिटिव एक्स एक्स स्क्वायर राइट, पॉजिटिव मींस ऊपर तरफ, y के डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन. अगर ये वाला है तो y इक्वल टू इज देयर, डेफिनेटली y का सिमेट्री रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज देयर, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो नीचे आएगा, पॉजिटिव तो ऊपर जाएगा. when we are dealing with projectile motion, that time आपको ग्राफ, ये ग्राफ्स पूरा हेल्पफुल होगा आपको. बिट्स में दे विल टेल विच टाइप ऑफ मोशन, कौन सा ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, आपको सॉल्व करके फाइनली यू हैव टू चेक वेदर x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर और y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, एंड वी हैव टू सी द ऑप्शंस व्हिच वन इज मैचिंग बोल के डिटेल में रहेगा. ऐसा नहीं कि ये तो नाम की वजह से ये क्यों यूज होगा, डायरेक्टली विल गो फॉर काइनेमेटिक्स, दैट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो सब नहीं है. आपको ईच एंड एवरीथिंग लर्न करो, ईच एंड एवरी प्रोसेस में आता जाएगा. ओके, done. Next one, very important. Whenever y is proportional to inverse proportional to x, y is inverse proportional to x, that time we'll get a rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola, उसका equation will be x y equal constant. So something, whenever some value, दो variables into constant आ गया तो that graph will be rectangular hyperbola. And a circle का equation you know, x square plus y square equal to a square, where a is radius. Done. Next, ellipse का equation, x square by a square plus y square by b square equal to 1, where a is called semi major axis and b is called semi minor axis. ये एलिप्स किधर सीखने वाला है हम लोग, ग्रेविटेशन चैप्टर में सीखने वाला है.
The Earth revolves around the sun in an elliptical orbit. सेमी मेजर केपलर्स लॉस यूज करके सॉल्व करने वाला है. x square by a square plus y square by b square equal to 1. And 1 minus e power x का ग्राफ will be like this ऐसा. इधर से जाएगा nearly equal to 1. 1 minus e power x. Okay. Next one is मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ रहेगा. मॉड मीन्स मालूम है ना, जो भी नेगेटिव वैल्यू है दैट विल बिकम पॉजिटिव वैल्यू. सो दैट्स व्हाई अबव ओनली विल बी देयर. दोनों. Yes. Yeah. चलो क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन ग्राफ्स. The equation of a straight line having slope is given, y-intercept is given, is telling to form the equation. Tell the option also. Sir, B. B, yeah? Yeah. Yes, correct. The equation of a line is much. Its x-axis and x and y intercepts are. Sir, B. B, yeah, why? Because if you substitute B values, it will become 0. No? It will become equal. कौन सा? B. Oh, that only. How you done, tell me. It will become 0, right, on both sides. Then 0 नहीं. X intercept means which will be 0? Y. So y को 0 लगाओ. X equal to how much? 1 minute. Y को 0 लगाए Equal तो to 2. 2. So 2 वाला ऑप्शन ए क्या है. P. एंड y इंटरसेप्ट में x will be 0. x 0 लगाए तो Minus y 3. equal to -3. So 2 comma 3. Or here also you can bring, देखो 2y is equal to 3x minus 6. Y is equal to 3 by 2x minus 6 by 2 is 3. So what is y equal, compare with y equal to mx plus c. What is the y intercept is -3. Minus 3. Okay. Next. The equation of the line making 135 degrees with the positive x-axis and passing through the point. मतलब 135 degrees से we can find slope and point is given. We have to form the equation.
So it is a Sir, point slope form. Huh? C. Yes. B या D या? C. C या? No wrong. देखो y minus y1 equal to m into x minus x1 because point x1 y1 is a point and slope form. We can find the equation, right? Y minus y1 equal to m into x minus x1. M is how much? How to find m? When theta is Tan given? 135. Tan theta. Tan 135 is how much? Tan 45. Tan 45. Yeah. No wrong. Why? You forgot 135. all silver 80 teacups. minus 45. No? Oh no, all silver teacups लगा के साइन कन्वेंशन लगा के करने का. Okay. So कितना होगा? Tan I can write as 90 plus 45. Which quadrant it is? 90 plus theta. Second quarter. Second quadrant में all silver teacups, right? Side tan will be Minus. minus. And 90 to 270 trigonometry will change. Yeah. So क्या होगा? Cot 45. 45. So it is minus 1. Minus. Now substitute y minus y1. Y1 is 3 equal to minus 1 into x minus x1 is 2. So y minus 3 is equal to minus x plus 2. X plus y minus 5 equals to 2. Or this one, y equal to minus x plus 5. So we have to see what is given and based on that we have to form the equations. In PV equal NRT graph में is asking at constant temperature. Whenever at constant temperature में what will be the graph? Sir, A. Yes, because a inverse relation rectangular hyperbola, right? Yeah. एक SHM means simple harmonic motion which we are studying in oscillation chapter में. Suppose velocity is varying like this, omega under root a square minus x square, omega is greater than 1. They told the graph b versus x graph will be. वो कौन सा ग्राफ होगा? तो उसको सॉल्व करके इधर उधर लेके आके देन ओनली वी कैन डिसाइड विच वन इज ग्राफ बोल के. Sir, देखो ellipse. squaring and both sides we are doing first. Yeah, B square B equal square to by square. omega square is equal to a square minus x square. Yeah. And dividing with a square. So क्या होगा? B square by a omega whole square. ये वाला इस तरफ आए तो प्लस x square by a square equal to 1 and dividing each term with a square. Yeah. So now x square by a square plus b square, b is nothing but y-axis, right? By omega square equal to 1. So which formula जैसे मैच हो रहा है? X square by a square plus y square by b square equal to 1. Ellipse. Ellipse. Okay. अभी ये भी ellipse है, ये भी ellipse है, ये भी ellipse है. ये सर्कल है ना? ये तो नहीं है. ये दोनों चांस होगा. Then which one is right? देखो x square by a square. A is the semi major axis. Semi major axis है. And y square by b square. Okay. Minor axis. Minor axis. So which one is greater? No. Sir, B, no. Why b? Because the value is positive. No. देखो y omega is greater than 1 means a omega is greater than 1, right? Yeah. मतलब a square is greater, a omega square is greater. Which is greater? A omega square. Y axis में it is greater, right? Y axis का Yeah. greater है ना? So y axis का greater value means ये वाला. Okay. Yes, sir, done. Done. Okay. Now a भी एक करेंगे हो जाएगा. Logarithms भी एक करेंगे हो जाएगा. Logarithms. Okay.
When we have to apply, what do you know about logarithm? Tell me. बोलो. I don't हो गया ना स्कूल में कॉलेज में. ओके. देखो लॉगरिथम आपको know. पीपल को कभी भी लॉगरिथम फॉर्मूला के थ्रू तरफ देखेगा भाई. वी हैव टू यूज आल्सो. वी डोंट नो. देखो आपको मेजर कंसर्न आई एम टेलिंग यू. ठीक है. लॉगरिथम डेफिनेशन देखेंगे. ए लॉगरिथम इज डिफाइंड एज इफ ए पावर एक्स इक्वल टू बी फॉर्मेट में है, देन एक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए ओनली वी आर यूजिंग लॉगरिथम. x value is equal to, like how to use log b to the base a is equal to x. मतलब indirectly x value find करने के लिए whenever this format में होगा तो we are to find. See standard format में होगा. देखो normally if you see examples, देखो 2 power 32 को you can write as 2 power 5, right? 32. So x value here is 5. We can able to find easily. Okay. अगर इसका 1000 है तो x वैल्यू कितना होगा? 3. बिकॉज a पर x इक्वल b फॉर्मेट में, राइट? x वैल्यू फाइंड करने का. बट सम अदर वैल्यूज आर गिवन. सपोज a समथिंग 2 पावर x इज इक्वल टू 5.2 is given. Then what will be the x value means difficult. दैट टाइम आपको लॉग यूज करना पड़ेगा. स्टैंडर्ड तो इजी है, डायरेक्ट कर सकते हैं. बट एक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए लॉगरिथम टेबल विल बी देयर, लॉगरिथम बुक विल बी देयर. वो वैल्यूज देख के एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स कितना लगाए तो विल गेट 5.2 बोल के आपको वो आ जाएगा वैल्यू. ओके. उसके लिए लॉगरिथम इज यूज्ड. देखो लॉगरिथम टेल्स अस द पावर एक्सपोनेंट टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड टू गेट ए गिवन नंबर. कितना रेज करूं टू गेट ए गिवन नंबर, दैट वैल्यू इज गिवन बाय लॉगरिथम. देखो एग्जांपल लिखो. एंड जनरली नॉर्मल वन वी आर यूजिंग बेस 10 वाला वी आर यूजिंग कॉमन में बेस 10. ओके. नेक्स्ट देखो some loss you know already, that is log a to the base a is 1, log mn is log m plus log n, log m by n is log m minus log n, log m power n means power will be coming this side, n log m. Yes, sir. ओके. देखो हाँ ये वाले लर्न करने का. log 2 is 0.3, log 3 is 0.4. देखो 3 है तो 4 आएगा, 2 है तो 3 आएगा. 0.3 0.4 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. ये अगर लर्न किया तो यू नो एनी अदर वैल्यूज यू कैन डिराइव फ्रॉम दिस. 2 and 3 आपको लर्न करना पड़ेगा. ये किधर यूज होगा लॉगरिथम्स? विच चैप्टर विल बी यूजफुल एक्चुअली? इट इज थर्मोडायनेमिक चैप्टर. लास्ट चैप्टर में आपको यूजफुल होगा ये लॉगरिथम का. ओके. चल वैल्यूज भी ये वैल्यूज बैड करने का एग्जाम में नहीं देगा एडवांस में. चलो ये करो. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ log 12 टू द बेस 10. ऑल वी आर डीलिंग विद बेस 10 वाला ओनली. अगर नेचुरल लॉगरिथम आने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो वाला, बट बेस वाला तो ये वाला. log 2 value is given, log 3 value is given. How to find log 12? How to find, tell me? Log 12 to the base 10. Log 6 into log 2. No. Log 4 into 3 I can write. Okay. Log mn formula is what? Log m plus log n. Log m plus log n. Okay. Log I can write 4 को 2 square. Yeah. A log a power m is m into like 2 into log 2 to the base 10 plus log 3 to the base 10. Now you know the log 2 value, log 3 value, multiply and get the answer.
Sir, 1.079. 1 point. 079. Yes, correct. I करो. You want to sleep, huh? Or 5 minutes I want to take. Sir, I don't know. Don't sleep, huh? Sir, I don't know, sir. Okay. Sir, okay. Yeah, yeah. 5 minutes. Okay. Find the value of log 16 to the base 10. एक काम करो, this one you note down, you do homework हो जाएगा.